KL Rahul would be a very happy man, of course, but somebody who was not happy was Rishabh Pant, and he did mention at the post-match presentation that it was pretty much at the toss where they probably lost it. Toss played a huge role, and why did it play a huge role? We'll get into that a bit later. But let's look at the batting cards first of all. LSG batting first, 159 for six. The way Aiden Mitchell Marsh started, 52 of 33 and 45 of 36. One point in time, they were what, 98 for no loss or something in the eighth over, and from there onwards, it was kind of became a huge struggle. Once Nicholas Puran, their most informed player, got out early to a Mitchell Stark slower delivery, played on to his stumps, and very surprisingly, you had an Abdul Samad, who we have seen as an impact seven LSG are chasing this time around. He was there in the 11, and he came in at number four, not a David Miller, not a Rishabh Pant, but it was Abdul Samad again. Very struggling innings. He had just 8 balls of two, and it was that particular over of Mukesh Kumar where he also got one more wicket, and that of Mitchell Marsh, and that really turned the tide in Dacey's favor. And still, we did not see Rishabh Pant walk out. It was David Miller who came out, not out on 14, and the Ayush Baduni had come out, did come out. Mukesh Kumar getting him out for 36 of 21 deliveries. Pant did make an appearance, but just for two deliveries and getting out without scoring. And this has probably been one of the biggest talking points. And sports fan, our regular viewer, is coming in with this opinion. Yes, sending some of the number four such a momentum breaker for LSG, and they never recovered from that. More than that, Rudran sending some of that number four, not putting himself there at number four, Rishabh Pant, that was the biggest momentum breaker. And I think we did hear from Pant the reason why he did not bat at that position, or why did not he come in early. Clearly, he is not trying to be MS Dhoni here, but yeah, that just doesn't make any sense in that any which way you look at it, right? Yeah, I saw a meme that said that Pant is now the perfect IR for MS Dhoni because what he's doing. I think, yeah, I completely agree with Sportsman that sending Abdul Samad at that position was a momentum breaker, deal breaker, in fact, because why would you change something that is working so well? Because Abdul Samad has been batting so well in the last 3-4 overs. We were talking last time after the LG's last match that now finally, irrespective of what is going on with other players, you have Abdul Samad with an entry point completely sorted. He could bat. You just have to blindly send him at the 17th, 18th over, and he'll do the job for you. Even in 16th over, if you send him 16th, he'll hit a 50 for you. That position couldn't have been better place for Rishabh Pant to come in. The opening partnership had set a decent stand, and you just have to build on it. Even if he had come in and taken some time for himself, it would have worked well for him. It's just it, him coming for the last two balls and not coming at when Ayush Baduni came in, not coming when David Miller came in. It was just mind blowing to me because what are you waiting for? You are not going to be the finisher for them. No, you were never a finisher for Delhi Capitals. You were never you have never been a finisher for India, or at least a good finisher for India or Delhi Capitals. And why are you going to do that? Because your best play has always come at from number 1 to 4. Anything below number 4, you are not good enough. So why are you not delaying yourself more and more? That doesn't make any sense. And we have already spoken about why David Miller should be sent ahead of someone like Ayush Badoni. They that even if you didn't want to come, and if you wanted to get someone experienced in, you could have sent David Miller number 4. Even at least he would have done better than Abdul Samad. No, Abdul Samad is just you are hurting his confidence, and you are hurting your team as well. It doesn't make any sense. Yeah, absolutely. It doesn't make much of a sense, and we have Harshit is joining in. Harshit, यार वही बात है कि किसी भी तरीके से आप इस चीज को देख लो, कोई सेंस नहीं बनाता है कि ऋषभ पंत जो आपके वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दिस आईपीएल, आप अपने आप को इतना पीछे रख रहे हो. व्हाट डू यू सी हिम, what are you yourself seeing him in that role? कि आप कहाँ नंबर 4 पे आप खेलोगे, नंबर 7 पे खेलोगे, कहाँ पे आ रहे हो? अब्दुल समद को आप अपने ऊपर लेके जा रहे हो. डेविड मिलर की हमने बहुत की थी कि यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. यू इनफैक्ट वर द वन हु पॉइंटेड आउट हाउ ब्यूटिफुली
GT were utilizing David Miller or it was Rudransh. But in any case, we were in at the same line thinking कि यार डेविड मिलर को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. आप खुद की आपके पास है बिग हिटिंग प्रोवर्स है, फिनिशर है नहीं है, दैट्स अनदर थिंग, बट यू आर द प्राइम बैटर इन दैट लाइनअप. और अब उस टाइम पे आप नहीं लेकर आ रहे हो जहां पे आपको मोमेंटम था. एंड ऋषभ पंत ऑल्सो गोइंग एड सेइंग कि नहीं, अब्दुल समद को भेजने का रीजन ये था कि हम उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे, एक्सप्लॉइट करना चाहते थे वो पिच. व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? नहीं तो ऋषभ पंत ये कह रहे हैं कि वो मोमेंटम अब्दुल समद कैरी कर रहे थे. मतलब क्या अब्दुल समद ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज हैं, या फिर उस लखनऊ की फ्लोइंग जो प्लेइंग 11 है, वो जिस प्लेयर, चाहे वो डेविड मिलर हो, चाहे वो पूरन हो, चाहे कोई भी आप देख लीजिए, क्या उन ऋषभ पंत से कोई बेहतर बल्लेबाज है उस प्लेइंग 11 में? आईपीएल को देखिए, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट को देखिए, आई डोंट थिंक सो. और ऋषभ पंत को शायद इसीलिए 27 करोड़ दिए गए थे. अगर आप बाकी सारे प्लेयर्स को कंपेयर कर लें तो मिला के भी शायद 27 करोड़ नहीं हो रहे हैं. तो एक रीजन दिया गया था ऋषभ पंत को कि सिर्फ कीपिंग के लिए नहीं लिया था, या सिर्फ कैप्टनसी के लिए नहीं लिया था. कैप्टनसी के लिए लिया तो शायद श्रेयस अय्यर को पैसे दिए जाते क्योंकि आईपीएल जीता है, या फिर अगर कीपिंग के लिए लिया जाता तो और भी शायद बेहतर कीपर हैं. ऋषभ पंत को इसलिए लिया गया था दैट ही इज एन इम्पैक्टफुल प्लेयर. वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं गेम्स में, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने कई बार ऐसे इम्पैक्ट किया है. पर इस आईपीएल में ऋषभ पंत सिर्फ एक चीज में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो है अपोजिशन टीम को जिताने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज से, अपनी बैटिंग से. आप कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, बट कैप्टनसी ऋषभ पंत ने कैप्टनसी में कॉल लिया ना कि मुझे नंबर 7 पर आना है, मुझे अपने से पहले ऊपर अब्दुल समद को भेजना है. आप देखिए 87 रन का फर्स्ट विकेट का पार्टनरशिप था 10 ओवर में. उसके बाद जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेला, मुझे समझ नहीं आया. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अब्दुल समद नंबर 4 पर आपने भेजा, आपका एक प्लान बैकफायर हुआ. नंबर 5 पे डेविड मिलर आया, स्टिल अंडरस्टैंड. नंबर 6 पे तो आ सकते थे. आपने इम्पैक्ट प्लेयर को भेज दिया, आपने एक इम्पैक्ट प्लेयर खिला दिया. आयुष बदोनी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आके खेल गए. वहां पर मेरे को पॉइंट है, वहां पर कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे? क्या वहां पे ऋषभ पंत नहीं आ सकते थे? आपने एक इम्पैक्ट प्लेयर को, जो प्लेइंग प्लेयर आपकी प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं, आप उसको लेकर आए रेदर देन यू नॉट गोइंग इट. एंड डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता आईपीएल का किस पूरी टीम में किसी के पास है. तो दैट शोज की कोई प्लान नहीं है. जो भी उन्होंने आके बोला कि मोमेंटम क्रिएट कर रहे थे, इट वाज जस्ट दैट कि आके पीसी में कुछ बोलना है. बिकॉज इम्पैक्ट 4 पे नहीं था, बट 5 पे 6 पे तो हो सकता था. सो फॉर मी दैट वाज क्लूलेस. और ये क्लूलेस कैप्टेंसी भी है. और क्योंकि क्लूलेस इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखो प्लेइंग 11 का सिलेक्शन देखो आप इनकी टीम का, पिछले मैच में आयुष बदूनी ने आके 50 बनाया, तो आपने फिर उसको एक इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाला और उसको फिर लेकर आ गए. आपको पता ही नहीं है कि आपको किस प्लेयर को खिलाना है, किस प्लेयर को नहीं खिलाना. आप अपने टॉप 3 के बेसिस पे चल रहे हो, और उसके बाद आप ये ऐसे मिस मैनेजमेंट वाले डिसीजंस ले रहे हो. तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा. अब्दुल समद ने आईपीएल में, आप पिछले इतने सालों से खेल रहे हैं, आपके लिए भी खेला है, ऐसा कौन सा इम्पैक्टफुल नॉक खेल दिया कि मोमेंटम चेंज कर देते? इट लुक टोटली क्लूलेस अगेंस्ट मिचेल स्टार्क. उस ओवर में जिसमें विकेट गिरा था, वहां 4 डॉट बॉल करके मोमेंटम पूरा ब्रेक हो गया, वहां से दिल्ली कभी रिकवर ही नहीं कर पाई. सो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत शुड ओन हिज मिस्टेक्स एंड शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मेरी फॉर्म नहीं है, आई शुड नीड टू गेट बैक टू द ड्राइंग बुक्स एंड डू समथिंग. बिकॉज अगर ऐसे ही रहेगा तो टीम ये शायद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए, बट उसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी. एंड ऋषभ पंत विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस दैट हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, नंबर 4 का रोल इस टीम में एक प्रॉपर, एक जो ऋषभ पंत का फेवरेट रोल है वो दिया गया है, फिनिशर का रोल, या जो इम्पैक्टफुल प्लेयर. क्योंकि आपका जो टॉप ऑर्डर जिस तरह से आपको स्टार्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको ऋषभ पंत यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. और वहां से पूरा टीम का जो अब देखो 87 के स्टार्ट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक टीम अगले 10 ओवर में इसको कम से कम 100-150 रन बनाए, 100-120 रन बनाएगी विद द लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत, विद द लाइक्स ऑफ डेविड मिलर, एंड एज अ फिनिशर अब्दुल समद मे बी इन द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स. बट वो पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्ट्रॉय करके पूरा खराब करते रहो. तो टोटली ऋषभ पंत ही नीड्स टू गेट बैक टू हिज ड्राइंग बोर्ड. यस ऋषभ पंत इज क्लियरली एट फॉल्ट हियर. और जहां पे चलो अब्दुल समद की आप बात कर लें, हैड अ बैड डे बिकॉज द लास्ट गेम दैट ही प्लेड ही मेड द इम्पैक्ट, बट द इम्पैक्ट वाज इन द डेथ ओवर्स. वहां के जो आखिरी ओवर में जो उन्होंने रन मारे, दैट मेड द डिफरेंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पुटिंग हिम एट नंबर 4 डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल. अब थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि एक स्पोर्ट्स फैन का एक अच्छा इंटरेस्टिंग कमेंट है कि इफ पंत हैज नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट इन हिज कैप्टेंसी, आई think that is the thing. Confidence वो बैटिंग में नहीं आ पा रहा है, and that is pretty much being shown in the captaincy as well. So sportsman is pretty much right there. He's lacking confidence, and ये पहली बार नहीं हुआ है. We have seen in the past as well that Pant has been delaying his own entry here. So that's quite weird. Or LSG के लिए it's not a good thing. Maybe we don't want to say that, but that spat with Goenka and KL Rahul may be revisited sooner than later if this is the trend that goes with LSG. And also one of the factor was that here
मयंक यादव जिसको आप लेकर आए हैं फॉर द सेकंड स्ट्रेट गेम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट प्लेयर थिंग यू आर मिसिंग आउट ऑन हिज bowling. Maybe he may have created an impact with the ball. क्या पता, but then again you had utilized आयुष बदोनी upfront, so आप कुछ कर ही नहीं सकते.